Great. We are starting with our day 6 chapter, works like magic. Yeah. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the widest edges of edges. Then you force into the realm of magic. Tom Robbins, 1936 writer. Yeah. So whenever you're doing something, just check for yourself. Are you giving your 100% to it? So 100% भी नहीं देते हैं हम लोग. What this book is talking about is going beyond your 100%. मतलब जितना भी आप उसका मतलब और छोड़ देखते हैं ना कि कहाँ तक जाके ये खत्म हो सकता है, कहाँ किस लेवल तक आप ले जा सकते हैं. You have to go beyond that. जैसे होता है ना कि push your boundaries when we say ना push your boundaries. हम किसी को भी performance के लिए बात करते हैं ना, so we always say push your boundaries. To push your boundaries is all about this, that whatever you're doing it with so much of commitment and passion that you are going beyond what is expected of you. जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम ऑफिस में काम करें, चाहे हम घर पे काम करें, when we try to do it, you know, perfectly, हम लोग अक्सर ना 80% 70% पे ही satisfied हो जाते हैं करके. But what this book is talking about is going beyond 100%. Push your boundaries. Yeah. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest person in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? Okay, so we all have such examples around us. Even if you look at some world leaders, I mean, हम और कहाँ जाने की जरूरत है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए. He had such a humble childhood and beginning, and see where he is today. And then if you look at your own college friends, your own college school friends, we all started together. और कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे अपनी क्लास में, जिनको देख के आपको लगता होगा यार ये कितना इंटेलिजेंट है, और या कितनी इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है या होने वाली है. बट surprisingly they didn't do well. And there are people who were not considered to be very intelligent and smart and had a very normal kind of upbringing and childhood, but they have risen to certain levels. How come? ऐसा कैसे होता है? I mean, even if you look at Ambani's, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को देखो, एक ही घर में थे, माँ बाप ने एक जैसे ही पालन पोषण किया, एक जैसा ही they divided the assets and opportunities. And look at one brother who's the richest person, the other person is not where he started also. ऐसा क्यों होता है? Yeah, let's read. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude,
It's impossible to have permanent success. Yes. So what did it say? Without gratitude, it is difficult to have permanent success. Temporary success मिल सकती है, but to sustain it, retain it, it is difficult without gratitude. बिना gratitude के आपके पास जितना मर्जी धन हो, सक्सेस हो, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. So wherever the success eluding you or eluding people around you is, the only thing you need to check is the only link which is missing. इतनी मेहनत के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी वो इंसान अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो क्या कमी है वहां पे क्या मिसिंग है? So the missing link is gratitude. Because without gratitude, you can't have permanent success. Temporary मिल सकती है, कुछ टाइम के लिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट उसको बनाए रखने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है. या To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. okay, just go up. What it is talking about is opportunities, appreciation, promotions, money, brilliant ideas. अब जब कोई प्रोजेक्ट होता है in an organization, when they're coming up with a project and they're having brainstorming sessions, everybody is talking about what are their ideas. वो brilliant ideas जो होते हैं, जो फिर बाद में incorporate हो जाते हैं, implement होते हैं, ऐसे ideas भी उन्हीं को आते हैं, पैसा भी उन्हीं के पास आता है, opportunities भी उन्हीं को मिलती हैं. किनको? जो हमेशा gratitude करते रहते हैं, because whatever you pay gratitude for will increase. वो तो abundance में मिलना ही है. वो opportunities भी हैं, पैसा भी है, brilliant ideas भी हैं. Yeah. So the missing link is gratitude. और जितना gratitude देंगे आपके काम के एरिया में, whether it is your job, whether it is your business, काम के एरिया में वो appreciation, acknowledgement, पैसा तभी आएगा जब आप gratitude देंगे. हाँ जी. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. हाँ, so she says कि जब आप grateful होगे तो आपको और ऐसे मौके मिलेंगे grateful होने के लिए. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कुछ है, अब काम से रिलेटेड अगर आपके पास है, अगर आपके पास मान लीजिए 5 वेंडर्स हैं या 5 क्लाइंट्स हैं, and you are grateful for them, and once you are grateful for them, you will get more such clients, more such vendors जिनके लिए आप और grateful होगे, because you are attracting them with your gratitude. तो एक चीज अच्छे से समझ लो, because अगर आपको याद हो, नहीं याद तो याद रखना जो भी नेक्स्ट आ रहा है. The basic principle is whoever has gratitude for whatever that person has will increase. तो ये एक चीज है जो हर जगह अप्लाई होगी, चाहे वो आपका हेल्थ का एरिया है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का एरिया है, चाहे वो मनी का एरिया है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया है. किसी भी एरिया में जहां पर भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, the only thing which you need to remember is be grateful. You have to pay gratitude for what you already have. जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, अगर आपको और चाहिए अपनी जिंदगी में. हाँ जी. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she will be taken from him or her.
Okay, so अगर आप अपने काम के एरिया में देखोगे, if you're working in office, you are not getting promoted. If there is somebody in the organization, and despite putting so many years of work and all, is not being promoted to the next level, and that person is cribbing. The person is cribbing, and when you're cribbing, when you are having negative thoughts, do you think you'll be able to perform your 100%? Yes or no? No. Yeah, because you are not being grateful. You are only complaining. और जहां कंप्लेन है वहां पे तो 100% देगा ही नहीं कोई भी, तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही हैं आपको। और क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, when an organization is thinking of downsizing the organization, जब वो ये सोच रही होती है कि हमें अपने अपने खर्चे कम करने हैं, ओवरहेड्स कम करने हैं, अपनी मैन पावर कम करनी है, so such people who are not performing as expected, अपना 100% नहीं दे रहे हैं, they are the first ones to be taken in that list. I remember when I was in my last organization, जब बीच में काफी issues आ रहे थे like economy में, so they were downsizing the organization. और बहुत I remember जनवरी के महीने में अक्सर लिस्ट निकलती थी कि किस किस को उन्होंने टाटा बाय बाय करना है. And there used to be a room, I remember that room. एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसको वो लोग ना पूरा उसमें, हालांकि हमारे सारे रूम्स ग्लास पार्टीशंस थे सारे के सारे, उस रूम को ना वो लोग कुछ लगा के ना, जैसे वॉलपेपर या कुछ भी करके उसको ना ओपेक बना देते थे कि दिखे नहीं अंदर बाहर का. एंड जैसे ही वो बंद, मतलब वो लगना शुरू होता था ना, हमें समझ आती थी कि बस ये वो वाली एक्सरसाइज शुरू होने वाली है. एंड सबकी सांसें रुकी रहती थी, सबकी सांसें रुकी रहती थी कि आज पता नहीं किसको बुलाएंगे, बिकॉज दैट लिस्ट वाज नॉट शेयर्ड. दे यूज्ड टू जस्ट कॉल पीपल इन दैट रूम एंड they used to just give them pink slip कि ओके जी बाय बाय थैंक यू. तो ऐसे लोग जो अपना 100% नहीं देते हैं, उनके जॉब्स जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड पीपल हु आर इन बिजनेस एंड इफ दे आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर देयर क्लाइंट्स, अगर उनको अपने क्लाइंट्स जो उनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं, आप उनके साथ अगर आपको ये लगता है कि ये यू आर नॉट हैप्पी विद देम और यू आर नॉट हैप्पी विद योर सप्लायर्स, तैयार हो जाओ. आपको जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी या तो अच्छा रॉ मटेरियल नहीं देंगे, या अच्छी चीज सप्लाई नहीं करेंगे, या दे विल बिकम इरेटिक इन देयर सप्लाई. आपको रेगुलरली टाइम से देंगे ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल. So one has to be just thinking at, looking at it कि अगर आपका बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, तो you have to start looking at it कि इशू आ कहाँ रहा है. Is it something to do with the supply chain management, या ये मेरे मैन पावर से कनेक्टेड है, या मेरे क्लाइंट से कनेक्टेड है. You have to start first looking at it कि इशू कहाँ पर है, and then the only thing you need to check is कि क्या मैं वहां पर ग्रेटफुल हूँ. जितने क्लाइंट्स मेरे पास हैं, क्या मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ. जितने मेरे वेंडर्स हैं, am I grateful to them for the kind of supply they are providing or timely supply they are providing. Whatever it is, you have to just start looking at it कि मैं कहाँ पर grateful नहीं हूँ. You have to start working on that. And if you're working at an office, you have to start looking at it कि मैं ऑफिस में किन किन चीजों के लिए कंप्लेन कर रहा हूं या कर रही हूं. Am I complaining about my boss? Am I complaining about my colleagues? Am I complaining about the facilities? Am I complaining about the policies of the organization? आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, आपके अप्रेजल्स के टाइम पे आपको सबसे कम वाले बकेट में रखा जाता है. क्यों? It is all because you are not being grateful. The only thing you have to look at is where is the lack of gratitude. हाँ जी, पढ़ें. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job,
you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Okay, pause. So I don't know how many of you have worked in organizations, corporate world में किसने काम किया है या किसी भी कंपनी में काम किया है. हर तरह के लोग होते हैं. There are people who are always just कहीं ना कहीं किसी के पास खड़े होके कुछ भी नई पॉलिसी आती है या कुछ भी हो रहा होता है, they will just go and talk about it. सुना तूने? मतलब क्या है यार ये? मतलब कुछ तो एम्प्लॉयज के बारे में सोच लो. पीपल से दिस कंपनी इज प्रो एम्प्लॉय. कहाँ दिखता है? सिर्फ पॉलिसीज में लिख देते हैं. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल थिंग्स कुछ नहीं करते हैं ये एम्प्लॉयज के लिए. हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन? Yes. मैंने तो बहुत सुना है. आई वर्कड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 40 years एंड अगर मैं ये देखूं, मेरी फर्स्ट 2 jobs या 3 jobs के बाद तब तक तो आई वॉज इन माई 20s, तो वो कुछ और ही दुनिया होती है. when you start settling down in your jobs ना, तो then you start observing these things कि क्या कौन कैसे बात कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं. some people just join them. कुछ लोग साथ में शुरू हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, and all that. some people just cut themselves away. वो वहां से निकल जाते हैं. वो टिकते ही नहीं, वहां खड़े नहीं होते जो ऐसी बात हो रही होती है. वो अपने काम से काम रखते हैं. होते हैं ना ऐसे लोग भी जो अपने काम से काम रखते हैं. उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है. जहां पे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी होती है, दे विल बी कमिंग एंड टॉकिंग टू यू. बट व्हेन इट कम्स टू गॉसिपिंग और कंप्लेनिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नॉट. एंड वो फिर जब उनको आगे आगे प्रमोशंस मिल जाती हैं या उनको आगे आगे अच्छी इंक्रीमेंट्स मिलती हैं, तो वही लोग जो पहले भी बात कर रहे थे, फिर उसके बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं. देखा है ना चमचा? जब देखो अब बस अपने काम में घुसा रहता है और अपने बॉसेस के आगे पीछे घूमता रहता है. देखा, मिल गई ना इसको प्रमोशन, पता ही था. हमें तो कोई पूछता नहीं है, हम सारा दिन यहाँ काम करते रहे, फिर भी कोई परवाह नहीं करता है. होता है ना ऐसा? Yes. But they stop looking at themselves. They're always pointing fingers on others. वो ये नहीं देखते कि हम तो अपना 100% ही नहीं दे रहे हैं. अगर आप खड़े होकर कहीं पर गॉसिप कर रहे हो, कंपनी के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग दैट कंपनीज टाइम जो आपको काम के लिए मिला है. ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दे रहे हो. यू आर कटिंग कॉर्नर्स. और काम भी जब आप करते हैं, ऐसे लोग जो काम करते हैं, दे विल नॉट डू इट टू द परफेक्शन. वो ऐसे काम करके पकड़ा देते हैं कि बस करना है. उनको खुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज उनको चाहिए ही नहीं सेटिस्फेक्शन काम में. देयर आर पीपल, फॉर देम जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्क सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब तक जो भी काम कर रहे हो उसको अपनी तसल्ली से नहीं कर लेते हैं, वो अपने बॉस को देते ही नहीं है. एंड देयर आर पीपल जो सिर्फ ये होता है कि बॉस ने 3 बार पूछ लिया, यार पकड़ा दे, जो भी बनाया पकड़ा दे उसको, अपने आप देखता रहेगा. वैसे भी नंबर तो उसको उसी को मिलने वाले हैं इसके. देयर आर पीपल लाइक दैट because they are not giving their 100%, because they are complaining about the organization and the circumstances or whatever environment, everything. Obviously they will not be getting the kind of recognition, the kind of acknowledgement, the kind of money, the kind of promotions and opportunities. पर हम भूल जाते हैं. Yeah, please read. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business... Pause. This was very important. आपको जिंदगी में कितना चाहिए? आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में
कितना चाहिए डिपेंड करता है आप कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. So I would just like to share here. मुझे ना किसी ने एक ऐप बताई कि वहां पर ना बहुत सारे आपको लीड्स मिल जाते हैं फॉर दी one-on-one कोचिंग. एंड दैट गाय इज डूइंग वेरी वेल. जिसने मुझे बताया उसने उसी ऐप से बहुत सारे अपने क्लाइंट्स बनाए. एंड इसे मैम ये आपको बहुत हेल्प करेगा. आप इसको ना इस वाले ऐप में आप रजिस्टर कर लो एंड यू विल, I mean, they are not charging too much and all, but you will get good leads. And मतलब यहाँ पे आपको quality leads अच्छी मिल जाती हैं आपको. I said fine, I register for it. And I've been sending my, I mean, I've been picking up the people I want to coach and all, and spending money also. Nothing is getting converted. And I'm really getting present to it right now. I was not feeling like, I was always struggling कि मुझे कहाँ से leads मिलेंगी, कहाँ से मैं लोगों को टैप कैसे करूं. यहाँ पे मुझे बनी बनाई एक कहते हैं ना पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है, जहां पर leads are generated, like I'm getting leads throughout the day. दिन की 10 leads 15 leads आ रही हैं मेरे पास, and I'm not being grateful. और मेरा कंसर्न, मैं किस चीज के लिए बोल रही हूँ, यार एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, इतने पैसे लग गए हैं मेरे. So what am I doing? I'm not being grateful that I have this platform where I can actually get my leads generated, quality leads. I'm not focusing on that. I'm not being grateful for that. I'm not paying gratitude to that guy who's connected me to that. This is an eye opener for me right now. And I'm cribbing कि मेरे को तो ढंग के लीड्स ही नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो कन्वर्ट भी नहीं हो रहे हैं. लोग ऐसे लिख देते हैं कि मुझे कोचिंग चाहिए, एंड देन दे से कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ 2 महीने के बाद बात करूंगा इसके बारे में. I said, and at that moment I'm not being grateful that I had an opportunity to get connected to one person, and this person can get into converted client maybe after 2 months, 3 months, 4 months, but at least I have got his contact number. I can keep sending, whatever I want to send to him or her. I'm not feeling grateful for that. And I am actually complaining, यार इनको करना नहीं होता तो ये मतलब why do they register in such apps, portals पे जाके लिखते क्यों हैं? I've spent so much money and एक भी ऐसा मुझे मतलब जो committed या serious बंदा नजर ही नहीं आता है. I'm really getting present to it. Why I'm not getting clients? Because I am complaining. I'm not being gratitude. So this line is so important. मतलब मुझे इस line से ये चीज समझ आ रही है कि जितना आपको चाहिए अपने काम में, अपने business में, the only thing you need to do is जितना gratitude दोगे उस area के लिए, उतना ही आपको मिलेगा. Since I'm not paying gratitude at all, nothing is coming. It's not them to be blamed. It's me who's not paying gratitude. The only thing I need to do is, if I want more success, I want success in that area where where I'm not being successful, the only thing I need to do is increase my gratitude. So similarly, you have to start looking at your life. आपके काम से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या उतनी नहीं मिल रही जितनी आपको लगता है कि आपको चाहिए. Just increase your gratitude in that area. That's all. And things will start falling in place. I'm going to start. Hanji. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful
and replace gratitude with worry that their business spirals downward. Okay, so after Corona, most of the business people have been saying, यार कोरोना ने ना तो ऐसी कमर तोड़ी है, अभी तक खड़े नहीं हो पाए हैं, बिजनेस उठ ही नहीं रहा है, business is just not picking up, business is not growing, customers ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, and they are always complaining about the business, and no wonder their business is not growing. On the other hand, there are people, even during COVID, their business was flourishing. They got new opportunities, and they were doing so good even today. ऐसा क्यों? Because they were grateful for whatever they had. अब आप बिजनेस में हैं और आप आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं या दुकान पे भी नौकर होते हैं, they always saying ये तो ना बिल्कुल ही निकम्मा है, काम तो इसको मतलब कुछ बोल दो सही, इसकी आफत आ जाती है, इतना काम चोर है ना, जब देखो बैठा ही रहता है, बस इसको कोई काम बोल दो सही. You must have heard this very often. मतलब I heard it very often. और आज से नहीं, बचपन से मैं, जब से मैंने थोड़ी सी मुझे समझ आई है, मैंने यही देखा है कि हर दुकानदार पे, शोरूम पे, फैक्ट्रीज पे, they are always criticizing their employees. उनके लिए लेबर जो होती है, उनके लिए जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग. उनको लगता है बस पैसा लेने के लिए हैं ये लोग, काम वाम कुछ नहीं करते हैं. बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा है मेरा, क्लाइंट्स तो लाते नहीं है ये, कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजते नहीं है ये. अरे, आर यू मेकिंग देम सेटिस्फाइड? आर यू मेकिंग देम फील हैप्पी वर्किंग फॉर यू? इन सब चीजों के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है. एंड दे आर सो लिंक्ड टू ईच अदर. ये बुक तो बड़ी क्लियरली बोल रही है, जहां जहां ग्रेटिट्यूड नहीं होगा वहां जो है वो भी चला जाएगा. फिर होता है ना, लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, देन दे डोंट हैव पीपल टू वर्क फॉर देम एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल. फिर उनके पास कोई टिकता नहीं है. व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज द मोर यू आर ग्रेटफुल, द मोर इट विल इंक्रीज. और जहां जहां ग्रेटिट्यूड नहीं है, वहां वहां सक्सेस नहीं हो सकती है. हाँ जी, पढ़े. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to experience. Yeah. So even if it's your work, like people who are homemakers, especially women who are homemakers, अगर आपका काम सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, so this is also a job. And if you're treating it as सुबह से शाम तक बस इन बच्चों के पीछे लगे रहो, सुनते सुनते हैं नहीं है, बस एक को स्कूल छोड़ के आओ, दूसरे को लाने का टाइम हो जाता है, खाना सुबह का बनाओ, दोपहर का बनाओ, फिर इनको पढ़ने के लिए बिठाओ, बस यही लगा रहता है सारा टाइम. If you are cribbing, you're not enjoying your parenthood. You're not building that connection with your children. So this is, as it says, once in lifetime. एक बार बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी जिंदगी जिएंगे, उनके पास कहाँ टाइम होगा आपके लिए. बट जितना टाइम आप उनके साथ बिता रहे हो, cherish them. Give your 100% to be connected to them. And the kind of bonding you will build up with them is going to be phenomenal, जो आपने सोचा भी नहीं होगा. So even if you are raising your children, raise it with your 100% commitment and 100% of gratitude. Don't crib, don't complain. बच्चे बच्चे ही रहेंगे, जैसी हरकतें वो करते हैं वो करेंगे ही करेंगे. हाँ, उनको डांटना है, उनको समझाना, that's a different thing. But
Cribbing and complaining about it all the time is not going to make any difference in your relationship with them. And once they grow up, this time will not come back. So just cherish this time and give your, as much gratitude as you have, because आपके पास बच्चे हैं तो सही, वो भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं, वो तरसते हैं कि हमारे पास भगवान हमें एक बच्चा दे दे. You have children, so value them. Pay gratitude that you have children and you have the opportunity to raise them. आप उनको वो संस्कार दे सकते हो, आप उनको वैसी अपब्रिंगिंग दे सकते हो कि वो अच्छे सिटीजन, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने. This is the opportunity the Almighty has given you. So be grateful for that and be grateful for your children. Yeah. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, Yeah. So many time it happens कि हमें जैसी नौकरी चाहिए, जिस तरह का जॉब चाहिए, वैसा नहीं मिलता. नहीं मिला कोई बात नहीं, at least you have a job. So be grateful for what you have right now. And once you start paying gratitude for that, your dream job will automatically be drawn to you. आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, लोग कनेक्ट हो जाएंगे और अपने आप आपको वैसी जॉब मिल जाएगी जो आपकी ड्रीम जॉब होगी. बट कंडीशन इज बी ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ जॉब यू हैव राइट नाउ. जो भी जॉब आप कर रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ जी. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. ओके तो आज आपने क्या करना है, यू हैव टू हायर अ मैनेजर. मैनेजर रख लो, सेक्रेटरी रख लो, जो भी नाम रखना चाहते हो आप रख लो. एंड आपने उसको हायर करना है आज किस काम के लिए, कि आपने कितनी बार आज सुबह से लेकर रात तक अपने काम को लेके ग्रेटिट्यूड दिया, किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू माई मोबाइल राइट नाउ दैट इट हैज enabled me to connect with all of you through my mobile. Yeah. So I am being grateful to the service provider. I am being grateful to the battery of my mobile. So like that, when you start paying gratitude for each and everything connected to your work, तो आपका मैनेजर उसको नोट करता जाएगा. एंड रात तक आपने कितने बार आपने ग्रेटिट्यूड दिया अपने काम को लेकर is what is the assignment day. तो आज आपने अपना जो मैनेजर रखना है या सेक्रेटरी रखना है या सेक्रेटरी रखनी है, आपने उसको सारा दिन काम पे लगा के रखना है. बिकॉज जब भी आप किसी को हायर करते हो, बिठा के थोड़ी खिलाते हो. ये थोड़ी होता कि चल तू बैठ, सैलरी में तेरे को दे दूंगा, कोई बात नहीं, काम मत कर. काम करने के लिए रखते हैं ना, तो आज आपने ये मैनेजर को काम करने के लिए रखना है और उसको इतना काम देना है, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, हम जो भी जिसको भी रखते हैं उसको बहुत सारा काम देते रहते हैं कि खाली ना बैठे, ये कुछ ना कुछ करता रहे. आई रिमेम्बर मेरी फ्रेंड है, उसके फादर इन लॉ थे एंड ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर एंड यू नो दे हैड दिस, उनको आदत होती है कि उनके पास ऑर्डरलीज और ये सब होते हैं ना जो उनको मिलते हैं आर्मी से, तो वो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं उनसे. So he was so used to getting that thing done. He was in his 90s, so and he used to stay alone.
तो उनके पास जो भी मेड होती थी ना, जो भी मेड खाना बनाने आती थी या सफाई करने आती थी, वो करके हटती थी ना, तो उसको बोलते थे चल ठीक है अब तू दरवाजे जरा साफ कर दे, ये जो रखे हैं ना ये ब्रास की चीजें, जरा इनको ब्रासो मार दे, बाहर जाके पौधे पौधे ठीक करके आ जा, और ये कर दे वो। ही वुड नॉट लेट हर सिट, मतलब उसको हर टाइम कुछ ना कुछ लगाए रहते थे, बिकॉज उसको लगता था इसको खाली नहीं बैठने देना मुझे। तो आपने भी अपने मैनेजर को आज खाली नहीं बैठने देना है, उसको इतने काम पे लगा के रखो कि वो सारा दिन बस अपनी कॉपी पेन लेके आपके पीछे पीछे घूमता रहे और लिखता रहे कि आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया। या सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू टुडे। हाँ जी। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to a job? Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the phone you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. ओके पॉज। सो आपने आज करना क्या है, आप जो भी काम करते हो, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपने ऑफिस के बारे में किस किस चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सबसे पहला तो आपके पास जॉब है, आपके पास ऑफिस है जहां आप जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड वंस यू गो टू ऑफिस, क्या क्या ऐसी आपके पास सुविधाएं हैं जो आपको काम करने में आपको हेल्प करती हैं। सो द मोमेंट यू वॉक इन टू योर ऑफिस, आपके चौक वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है विच इज मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, आपके ऑफिस की सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा है कि कोई अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफिस के अंदर नहीं आ जाए। आफ्टर दैट व्हेन यू वॉक, तो आपकी रिसेप्शनिस्ट बैठी है जो भी आता है उसको गाइड करती है भाई कहाँ जाना है एंड ऑल, सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर हर। देन व्हेन यू वॉक अप टू योर डेस्क, तो आपका डेस्क है, आपके पास टेबल है, चेयर है बैठने के लिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो, अपना मोबाइल चार्ज करते हो। सो यू हैव ऑल दैट। देन यू हैव एक्सेस टू प्रिंट आउट। आई रिमेम्बर इन 80s आई वाज वर्किंग विद कंपनी कॉल्ड आयशर। तो आयशर मोटर के साथ हमारा टेक्निकल एग्रीमेंट साइन होना था, तो वो 100 पेजेस की मैंने स्टेंसिल काटा था, वो भी मैनुअल टाइपराइटर पे। और उसके बाद उसको उन्होंने किस तरह से कन्वर्ट करा के किसी प्रिंटर के पास ले जाके उसकी पूरी बुक्स बनवाई थी। तो प्रिंटिंग भी ऑफिस में नहीं होती थी, वी हैड टू गो लाइक नेहरू प्लेस में एक चावला प्रिंटर होता था, उसके पास जाके वहां से उसके बाइंडिंग करवा के उनके सेट्स बनवा के लेके आए थे। इट यूज्ड टू बी सो cumbersome at that time, and today you just have to click on your laptop and there is a network printer or there's a printer connected to your own laptop and you can just take a print out. कितना आसान हो गया। इट्स सो टाइम सेविंग। अदरवाइज आप जाते दूसरी जगह जाते, उसके पास काम होता, आपको वेट करना पड़ता, फिर वो आपका प्रिंट निकाल के देता, फिर आप वापस आते, कितना टाइम वेस्ट होता था ना। अभी ऑन जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट। या सिमिलरली पहले क्या होता था, पहले आपको फैक्स भेजने के लिए भी कहीं जाना पड़ता था, आपको फोन करने के लिए भी। मुझे याद है उस टाइम पे आईएसटी कॉल्स नहीं हो पाती थी, तो ये भारत क्या नाम था उसका, इट यूज टू बी नियर बंगला साहब, जहां से जाकर लोग फोन, मतलब अगर इंटरनेशनली कहीं कॉल करनी होती थी किसी कंपनीज में, जैसे जैसे आजकल हम, ISD, जैसे अभी तो हम जूम पे बात कर लेते हैं, टीम्स पे बात कर लेते हैं, तो yes. उस टाइम पे अगर आपको किसी बाहर की कंपनी में किसी से इंटरेक्ट करना होता था, तो विदेश संचार निगम था उसका नाम। एंड वहां पर जाके आई रिमेम्बर माय बॉस यूज्ड टू गो देयर टू मेक अ कॉल टू, जैसे किसी के साथ
टाइम फिक्स हुआ हुआ मीटिंग का, तो वहां पे बुकिंग करनी पड़ती थी एंड वहां जाके वो लोग बात करा करते थे. एंड टुडे यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर मोबाइल एंड जस्ट डायल अ नंबर एंड यू कैन कनेक्ट टू एनीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड. So you have to just start looking at these things के ये कितनी टाइम कंज्यूमिंग हुआ करती थी चीजें, जो कितनी टाइम सेविंग हो गई है हमारे पास इन गैजेट्स की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से. नाउ यू कैन जस्ट टाइप एनीथिंग एंड द पर्सन विल रिसीव इट ऑन व्हाट्सएप एंड इवन ऑन ईमेल. पहले क्या होता था कि आप टेलीप्रिंटर पे टाइप करते थे या आप फैक्स करते थे, वो फैक्स कितनी बार जाता ही नहीं था. Now it used to be so time consuming, and now on a click of a button you are able to connect, you are able to send the messages. So you have to be very grateful for all these things you have. तो आपके फोन्स, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका प्रिंटर, आपका लैपटॉप, all these things you can be grateful for. Then you have people who are supporting you. Yeah, you have your team, you have an IT support. आपके लैपटॉप में कुछ हो गया, IT support उसी टाइम आ जाता है, आपका सब सेट करके आपको फटाफट gives you that opportunity to start working again. Then you have people who are serving you tea. There are people who are cleaning your table. When you walk into the office, आपको अपना टेबल साफ सुथरा मिलता है. एक बार मुझे याद है, मैं एक बार ऑफिस पहुंची तो मेरी सारी चीजें हिली हुई थी and when I was trying to put them together, तो वहां बहुत थोड़ा सा गंदा था. And I was so annoyed. And I just called the housekeeping. I said, what is this? एक तो आप ढंग से सफाई नहीं करते हो, फिर सारी चीजें हिला देते हो. And just imagine अगर आपको खुद वो सब कुछ करना पड़े. But हम लोग ना, we just take these things for granted. कि ये तो because I had taken it for granted, that's why I was getting annoyed ना, ये चीजें क्यों हिली हुई हैं और यहाँ पे सफाई क्यों नहीं हुई है. Was expected है कि वो तो करके ही दे, सुबह सुबह मिलेगा ही सफाई किया हुआ. और आपको ये होता है कि the power supply is always on, internet is always on, AC is always working in the office, है ना. ये सब चीजें हमें, we have taken it for granted. और इमेजिन करो ये सब ना हो तो क्या हो. जो पुराने ऑफिसेस होते थे वहां पे कितना कितना टाइम तक लाइट चली जाती थी, काम करना मुश्किल हो जाता था. बट अभी देखो ना, अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है हमें काम करने के लिए. हर टाइम एसी चल रहा होता है, और वहां पे तो पंखे भी नहीं होते थे कई बार. शुरू में जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग नेहरू प्लेस में, एंड मेनी टाइम्स दैट यूज्ड टू बी लाइक लाइट चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा है, एंड हम लोग खिड़कियां खोल के बैठते थे, या कितनी बार तो बाहर निकल के खड़े हो जाते थे बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट टू सिट. बट टुडे लुक एट इट, द काइंड ऑफ comforts we have, the kind of facilities the companies are providing. अगर हम इन सब छोटी एक चीज के लिए मतलब देना शुरू करें ना, इतना कुछ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. और जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ही हमें उस एरिया में सक्सेस मिलेगा, उस एरिया में काम भी हम अपना पूरी तरह से कर पाएंगे और ग्रेटिट्यूड भर भर के दे पाएंगे. तभी उस चीज में हमें मतलब कहते हैं ना, हमें उसमें सक्सेस मिलेगा, हमें उसमें अबंडेंस मिलेगा. तो आज आपने सिर्फ यही सोचना है कि कौन कौन सी चीजें जो आपको अपने काम को करने में फैसिलिटेट करती हैं, एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम, द पीपल, द टेक्नोलॉजी, द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग. हाँ जी. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. Yes. हम कहते हैं ना, ये इंसान बड़ा लकी है, इसका ना देखो देखो कितनी जल्दी प्रमोशन मिल गई इसको, कितना लकी है. इट्स नॉट लक, इट इज gratitude that is at work, power of gratitude that is at work. तो आज आपने अपने मैनेजर को बस सुबह से लेके अभी जैसे सेशन खत्म हो, अभी से लेके रात के सोने तक इतना काम दो कि बस वो लिखता ही चला जाए या लिखती ही चली जाए और आप ग्रेटिट्यूड देते चले जाओ. जस्ट
keep the manager busy so that your life turns around. Hanji. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. Okay, so the other thing I wanted to mention here is okay, if you are not working, if you're a homemaker, if you're not working in an organization or in a business or something, but you are a homemaker, but आप काम तो वहां भी कर रहे हो ना? That is your work. आप वही काम कर रहे हो रोज. But for a change, आज जब आप खाना बनाने लगो तो हर चीज को, चाहे वो आप अपने नाइफ को लें जिससे आप सब्जी काटते हैं, चाहे वो आप बर्तनों को लो जिसमें आप खाना बनाते हैं, चाहे वो आपके गैस के लिए, चाहे वो आपके मसालों के लिए, चाहे वो आपके ऑयल के लिए, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स के लिए, चाहे वो आपके राइस के लिए, चाहे वो आप जिसका भी डो बना रहे हैं, मिलेट का, आटे का, जो भी है, हर चीज के लिए, because these are the things which are making your work, whatever you're doing, a success. खाना कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या जा रहे हैं. अगर आप हर इंग्रेडिएंट, हर चीज विच इज फैसिलिटेटिंग यू, जो आपको खाना बनाने में आज माइंडफुल होके हर उस चीज को अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे ना, आपको आज काम करने में इतना मजा आने वाला है, आपको खाना बनाने में इतना मजा आने वाला है, और इतना बढ़िया खाना बनने वाला है कि जो भी खाएगा बोलेगा आज क्या बनाया तूने, ये कैसे बनाया तूने, मतलब खाना इतना बढ़िया कैसे, आज तो बहुत टेस्टी है. You will be surprised to know that. And I'm not talking only about khana. Any work you are doing today, it could be just washing your clothes, just go beyond your 100%. जितने मन से आप रोज करते हो उससे कहीं ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हुए अगर आप उसको आज करोगे, you will be doing more than 100%. आप खुद ही 100% से ज्यादा उसमें अपने एफर्ट्स डालेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, but you will. So आज जो भी काम करो, whatever you are doing, give your 100% and give gratitude for each and everything जो भी आपको उस काम को करने में मदद कर रहा है. Yeah? Don't forget that कि आप जो भी काम करते हो वो एक तरह का काम ही है. Even if I am just going to the Gurdwara after this, from the place I'm staying to the Gurdwara, when I'm walking that, how grateful am I? Am I taking magical footsteps? Am I, being grateful that I am here today? Am I being grateful for the money I had because of that, which I could travel to this place? Am I being grateful that I'm so blessed that Guruji has called me here today? Each and every step of it, each and everything which is actually making it happen, are you being grateful for that? So कुछ भी आज आप कर रहे हो ना, वो एक तरह का काम ही कर रहे हो. You're doing something. Doing मतलब action. Action मतलब काम. कुछ तो कर ही रहे हो ना. हर चीज के लिए जो भी करो आज, भर भर के gratitude देना, भर भर के, and see how magical the day is going to go. And what it will bring to you, वो तो यूनिवर्स ही जानता है. हाँ जी, पढ़े. Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. 2. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. 3. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying,
I'm so grateful for, and feel as grateful as you can. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. So what you need to do is, number one, of course, you have to count your blessings. आपको 10 अपनी blessings लिखनी है, और कैसे लिखनी है वो आपको पता ही है. आज आपको करते हुए 5-6 दिन हो गए हैं. एंड आज की प्रैक्टिस क्या है? आज की प्रैक्टिस ये है कि आज आप जो भी कर रहे हो, आपने जो मैनेजर हायर किया है, बस उसको काम पे लगा के रखना है. अगर आप आज, जैसे पूरन और वरुण, they are going to Vrindavan today with their families, each and everything, whatever is making it possible for you to go there and do darshan, jo bhi kar rahe ho, for each and everything, just the only thing you need to do is keep saying gratitude. अपने मैनेजर को काम पे लगा के रखना है सबने आज, बिकॉज खाली बिठा के पैसे देने की कोई मतलब नहीं बनता है ना. तो आज उसको जब हमने हायर किया है, तो जो बस हायर किया है तो उसको लगा के रखना है काम पे. Starting from now onwards, till the time you go to sleep, just make that manager work. Every time you're saying gratitude, that manager is writing it. Yeah. So be mindful of it, that you have a manager who's actually watching you and saying gratitude. Yeah. Thank you so much, Almas, for supporting. Thank And you. and once the recording is over, you can just have it forwarded to me so that I can share it in the group. Okay. And thank you, Puran and Varun, for joining from on route to Vrindavan. And आप बड़े अच्छे से दर्शन करके आए, और हमारी तरफ से भी pray करें. And thank you so much, and I will see you from Delhi tomorrow. Sure, Jagjit. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Bye. Bye. And let's do the prayer, yeah? People just for forgetting the prayer. Yes. Yeah. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you very much, and I will see you tomorrow. Thank you.